सो हेलो एंड वेलकम। आज बात करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, जो कि क्लास 12 का टॉपिक है। सो अगर बात करें प्रिज्म का, तो प्रिज्म हमारा होता कैसा है, राइट? तो प्रिज्म इज समथिंग का ग्लास मटेरियल, राइट? ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब है, राइट? अब इसमें क्या है कि ये जो एंगल है, ऊपर वाला एंगल, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, राइट? और ये ग्लास का ट्रायंगुलर स्लैब है। अब क्या होगा कि अगर लाइट इससे आएगा, अब अगर कहें तो ये मेरा एयर है, राइट? और ये क्या है? ग्लास का बना हुआ है, ठीक है? तो एयर हमारा कैसा मीडियम है? दैट इज रेयरर मीडियम। और ग्लास कैसा है हमारा? दैट इज डेंसर मीडियम, राइट? अब लाइट अगर इसके अंदर जाएगा ऐसे यहाँ से, तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, दैट मीन्स रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। अब लाइट यहाँ पे कुछ बेंड करेगा और फिर यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो फिर से यहाँ से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो प्रिज्म में दो बार रिफ्रैक्शन होता है, राइट? एक बार जब इंटर कर रहा होगा तब, और दूसरा जब प्रिज्म से वो लाइट बाहर निकल रहा होगा तब, राइट? अब कह रहे हैं कि अब ये जो प्रिज्म है, राइट, we have to place everything. So what is prism? Prism angle and yeah. So this is our prism, right? A light rays, एक लाइट रे आ रहा है यहाँ से, चले गया। एक लाइट रे जो है इधर से आ रहा है अपना, ठीक है, मस्त। अभी जो लाइट आ रहा है, अब यहाँ पे जो है क्या होगा? नॉर्मल है ये, एक इस पॉइंट पे क्या है? ये नॉर्मल है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो लाइट है रेयर मीडियम से, एयर हमारा क्या है? दैट इज रेयर मीडियम है। और ग्लास क्या है? दैट इज दिस इज डेंसर मीडियम। अब कहते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होगा, राइट? और अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, तो जो लाइट का एक्चुअल पाथ है उससे बेंड करके किधर की ओर आ जाएगा? वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। सो अब कह रहे हैं कि दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट, राइट? और तो यहां से क्या हो जाएगा? ये बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। अब फिर क्या हो रहा है कि ये जो लाइट है, अब ये प्रिज्म से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा दैट मीन्स फिर डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रहा है, तो फिर से यहां से क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो इस वाले पॉइंट पे हमारा क्या है? दिस इज द नॉर्मल। अब हम लोग क्या जानते हैं, और ये क्या है? मेरा एक्चुअल पाथ है लाइट का। हम लोग क्या जानते हैं कि अगर लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो इधर की ओर नॉर्मल है तो इधर से दूर जाएगा, तो इधर आ जाएगा ये, ठीक है? और इस वाले एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस वाले को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, बाहर निकल रहा है उसको। अब कह रहे हैं कि ये जो प्रिज्म है, ये लाइट का एक्चुअल पाथ इधर की ओर था, इसको बेंड करके इधर की ओर कर दिया, ठीक है? तो जितना एंगल वो लाइट को बेंड कर दिया, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। एक्चुअल पाथ से कितना बेंड कर दिया, और इसको डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा से, राइट? So now this is the case in prism, and this angle we known as angle of prism. Angle of prism, right? So now अब देखते हैं क्या क्या चीजें होंगी, right? So this is our prism. This is our prism, right? A light rays यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ से बेंड किया, फिर इस पॉइंट पे, सॉरी, इस पॉइंट पे हमारा ये नॉर्मल हो गया, राइट? और यहाँ से ये बेंड कर गया। So, and this is the actual path जब light, that is incident ray, this is angle of incidence, this is angle of emergence, and this is our delta, that is angle of deviation, right? This is our A, angle of prism. Let this point will be P, this point will be N, this point will be Q, right? And let this will be X, this will be Y, this is Z, this is R1, and this is R2, right? So if we see A, P, and Q is a quadrilateral. So in quadrilateral
ए पी एन क्यू। अब ए पी एन क्यू क्वाड्रेटरल में चले तो हम लोग क्या जानते हैं कि सभी एंगल का सम, किसी क्वाड्रेटरल का सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। सो हियर दिस इज एंगल ए, this is angle P plus angle N plus angle Q equal to 360 degree. So angle A is the angle of prism. Angle P, this is the perpendicular, right? This is the perpendicular. So this is the 90 degree. And angle N, this is angle N. And angle Q, again this is perpendicular. Again this is 90 degree. That is equal to 360 degree. So from here, what we get, angle A plus angle N and 360 degree, and this 90 will become minus 90 and minus 90, this also. So angle A plus angle N, what we get, that is 180 degree, right? Now, in the second case, what we have seen, in triangle PNQ, right? In triangle PNQ, इन ट्रायंगल पी एन क्यू में क्या है कि हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का सारे एंगल का सम कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। सो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री। Let this will be our equation number 1 and this will be our equation number 2. And now if we add equation 1 and equation 2, right, or we can say not adding, equating equation 1 and 2. So equation 1 is angle A प्लस एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री किसके बराबर है, एंगल R1 प्लस R2 एन। सो एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एन के बराबर है। and from n or n will be cancel out, so from here what we get, angle A equal to R1 plus R2. So from here what we get, angle A equal to R1 plus R2, right? Now if we move in triangle P, let this will be W, in triangle PWQ, right? So we draw here triangle, this is P, W and Q. This is our X, this is our Y, and this is our Z, and here this is delta, that is angle of deviation. Look at here, this is delta in PWQ. This is X, Y, Z, and this is W, and this is our delta. So from linear pair that we know that Z plus delta equal to 180 degree. So what we can write, Z equal to, that is 180 degree minus delta, right? Again, what we know that vertical opposite angle. So if a two line passing, so this angle and this angle will be equal, right? So what we have seen here, angle I, ये लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन और ये लाइन। सो यहाँ एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस R1 के बराबर हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट, एंगल आई इक्वल टू x प्लस R1। एंड अगेन एंगल ई जो है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को देखें तो एंगल ई किसके, y प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। सो एंगल ई इक्वल टू y प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, राइट? और हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 degree. So x plus y plus z equal to 180 degree. So what is the value of our x from here? X is angle I minus R1. So that is angle I minus R1. Plus y, from here y, what we can write, angle E minus R2. So angle E minus R2. Plus z. Z हमारे क्या है? That is 180 minus delta. That is 180 degree minus delta, or that is equal to 180 degree. This 180 degree will be cancelled out this 180 degree, and this minus delta will go this side, will become plus delta. So this plus delta equal to angle I minus R1 plus angle E minus R2. So delta equal to angle I plus angle E minus R1 minus R2. So delta equal to angle I plus angle E. If we take minus common, this will become R1 plus R2. And we have calculated previously that angle A equal to R1 plus R2. So we put here. So what we get, delta equal to angle I plus angle E minus A. So we have calculated the
इक्वेशन 4 एंगल ऑफ डेविएशन, राइट।